Hello children, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, in my previous video, I explained the chapter 2, Digestion and the Role of Microbes. That is the second chapter of your science book, New Science in Everyday Life. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें क्योंकि मैंने चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझाया है और एक बार जब आप चैप्टर को समझ लेंगे तो ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड आंसर और बुक के बैक एक्सरसाइज भी सब कुछ आप खुद ही कर लेंगे। आपको इसे रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर मान लीजिए एक बार में आपको याद नहीं होता तो आप दोबारा उस वीडियो को देखें। और वैसे तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर और बुक्स के बैक एक्सरसाइज आपको करके दे रही हूँ। आप जब एक बार पढ़ेंगे तो आपको श्योर याद हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपने बुक्स के क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम बुक के बैक एक्सरसाइज को भी करेंगे। सो लेट स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ? द आंसर इज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स. Number 1, incisor. Number 2, canines. Number 3, premolars. And number 4, molars. Question number 2 is, write any 5 ways in which we can protect our teeth. The answer is 5 ways to protect our teeth. Number 1, brush your teeth at least twice a day, once in the morning and once before going to bed. Number 2, brush the top teeth downwards and bottom teeth upwards. Point number 3, brush out the back of the teeth. Number 4, brush the flat surface of the premolars and molars. Number 5, use a tongue cleaner to clean the tongue. Question number 3 is, what is digestion? Name any 5 parts of the digestive system. The answer is the process by which food is broken down into a simpler form so that it can be easily taken in or absorbed by the body is called digestion. Food pipe, stomach, small intestine, liver and large intestine are the 5 parts of the digestive system. Question number 4 is, what are microbes? Give any 3 uses of microbes. The answer is, microbes are very small living organisms that cannot be seen with the naked eyes, that can be seen only with the help of microscope. Use of microbes are given below. Number 1, some microbes are used in making bread and bun. Number 2, some microbes change milk into curd. Number 3, some microbes help in the digestion of food. And number 4 is, some microbes help in the process of rotating of dead plant and animals. Question number 5 is, name any 4 microbes and 2 diseases each of them causes. Answer is, 4 microbes and 2 diseases each of them caused by are following. Number 1, virus causes disease such as common cold and influenza. Number 2, bacteria causes disease like typhoid and tuberculosis. Number 3, fungi causes diseases such as ringworm and athlete's foot. Number 4, protozoa causes disease such as food poisoning and dysentery. So, the question answer is completed here. Now we start our book's back exercise. So let's start. Question number 1, objective type question. A.
Fill in the blanks with the correct words. Number one, there are dash teeth in a permanent set of teeth, 20 or 32. Correct answer is 32. In flesh-eating animal, dash are bigger and sharper for tearing teeth. The correct answer is incisor or canines. Answer is canines. Number 3, the dash form the central part of the tooth, pulp or dentine. The correct answer is pulp. Next, the dash produces juices that help in digestion of food, food pipe or liver. The correct answer is liver. Liver produce juices that help in digestion of food. Number 5, dash causes disease like common cold and influenza, bacteria or virus. So the correct answer is virus, because virus causes disease like common cold and influenza. So tick here virus. Next, write T for the true and F for the false statement. The crown hold the teeth in their place. No, it's gums. So this statement is false. So we can write only F for false. We should keep our teeth clean. Yes, we should keep our teeth clean. The esophagus holds food that cannot be digested and absorb water from it. No, it's large intestine. So this statement is wrong, and we can write here F. Next, microbes cannot be seen with the naked eyes. Yes, this statement is true. We cannot see microbes without microscope. We cannot see them naked eyes. We can see them with the help of microscope. Number 5, only microbes like virus and bacteria can cause disease. No, bacteria, virus, protozoa are all, fungi are all cause disease. So this statement only microbes and virus are wrong. So we can write here F. Choose the correct option. Which of these teeth are 12 in number in a permanent set and help in grinding food? Incisor, canines, premolars और molars. 12 नंबर किसका होता है? ये molars का होता है. So the correct answer is molars. So the correct answer is molars. Which of these are used for cutting and biting food? Incisor, canines, premolars, molars. So the correct answer is incisor. Incisor is a teeth which help us in cutting and biting. Question number 3. Which part of a tooth contains nerve and blood vessels, crown, dentine, pulp and gums? The correct answer is pulp. Next, which of these holds the teeth in place? The correct answer is canine, gums, tongue and nerves. The correct answer is gums. Where are feces formed? Anus, large intestine, small intestine and stomach. The correct answer is large intestine. Where does digestion begin? Where does digestion begin? Mouth, stomach, small intestine and large intestine. तो जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू होता है? वो माउथ से शुरू होता है. So the correct answer is mouth. Next,
What do microbes do? Change milk into curd, help in making bread, help in the process of rotating of dead plant and animals, and all of these. The correct answer is all of these. Next, which of these disease is caused by bacteria? Typhoid and influenza, influenza and common cold, typhoid and cholera, and malaria and food poisoning. So the correct option is option C, typhoid and cholera. This is caused by bacteria. Last, give one word for the following. Give one word for the following. The set of teeth in a child is called temporary teeth. Is called temporary teeth. The first answer is temporary teeth or temporary set भी कह सकते हैं हम उसको. Next. Now the next, number 2. The hardest substance in the human body is called enamel. Number 3. A yellow sticky layer that germs form on teeth is called plaque. चिपचिपे होता है, येलो कलर का होता है, हमारे दांतों पे चिपक जाता है. अगर ज़्यादा हम मीठा खाएं या खाना खाने के बाद हम ब्रश ना करें तो ये प्लाक हमारी टीथ पे चिपक जाते हैं, जिनमें कि बहुत सारे हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो कि हमारे अंदर डिजीज़ पैदा करते हैं. नंबर 4. द ऑर्गन दैट हेल्प्स टू रिमूव फीसेस फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी से फीसेस जो बाहर निकालने वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एनस. नंबर 5. एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू सी माइक्रोब्स कॉल्ड माइक्रोस्कोप. वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप कहते हैं. तो यहाँ पे हमारे बुक के बैक एक्सरसाइज, हमारे क्वेश्चन आंसर सभी ख़त्म हो जाते हैं. मैंने आपके लिए इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया है, हिंदी में भी समझाया है आपको. तो आई एम श्योर कि आप जब ये वीडियो देखेंगे, आप इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, आपको इमीडिएट बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको. तो आप एक बार देख के अगर नहीं समझते हैं तो आप दूसरी बार भी वीडियो को देखें. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. अपना ध्यान रखें बच्चों, घर से बाहर ज़्यादा ना निकले क्योंकि कोरोना अभी भी है. हमारे स्कूल नहीं खुल रहे हैं लेकिन हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए. अपना ध्यान रखिए, मास्क ज़रूर पहनिए और घर से कम ही निकलिए. ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों.